हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फूड बडी ऑफिशियल पे। आज हम बनाएंगे टेस्टी सॉफ्ट दही फुल्की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी फुल्की कितनी सॉफ्ट है। मैं इसका सीक्रेट भी आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दही के लिए एक मसाला तैयार करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, जीरा, लहसुन, नमक। अब इसे हम सिंपली पानी की हेल्प से पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब तैयार पेस्ट में दही में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको दही को अच्छे से मिक्स करना है। Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just treat इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट सोडा। ये नॉर्मल सोडा है जो आपके किचन में इजीली मिल जाएगा। चलिए के साथ बैटर तैयार करते हैं। आप मेरा बैटर देख सकते हैं, बस इसी तरह बना लें। आप बस देखिए तैयार करें, मीडियम से लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इन्हें नमक पानी में 5 मिनट तक सोख करें और फिर स्क्वीज करके दही में डाल दें। अब इसे जीरे का तड़का लगा दें। दही फुल्की तैयार है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, you're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.